Okay, students, let's start today's class. We continue with the previous concept of behavior of current carrying loop as a magnet. Whenever current is passed through a current carrying loop, it behaves like magnet. That means it shows the properties of magnet. That is very important. So you need to write down the polarity of magnetic dipole due to loop can be decided as follows. On looking towards the face of coil, if the direction of current is anti-clockwise, if direction of current is anti-clockwise, then face of coil will be a north pole. तो देखिए इसको यहाँ बहुत अच्छे से बताया गया है. ये देखिए anti-clockwise like this. So if you see that current is flowing in anti-clockwise direction, then you can predict that a north pole, you are facing a north pole, will be towards the observer. You need to note down, this is important. Towards the observer, क्योंकि हम जानते हैं डॉट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी. If the direction of current is clockwise, ये देखिए ये important है, clockwise, then that face acts like a south pole. ये देखिए मैंने करंट को क्या बताया है, क्लॉकवाइज बताया है. तो ये आपको बना लेना है clockwise, and here we have the current anti clockwise. अगर आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखती है तो वो जो फेस है कॉइल का वो एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है. और अगर आपको you are an observer, if you see the current flowing in which direction, clockwise direction, then you can say that the face of pole which you are seeing viewing behaves like a south pole. इसके पीछे कंसेप्ट बहुत क्लियर है कि हम मानते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके साउथ पोल की तरफ जाती है. तो जब हम राइट हैंड पाम रूल लगाते हैं एंटी क्लॉकवाइज करंट के केस में, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलती है डॉट हमारी तरफ. तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमारी तरफ आ रही है. तो इट बिहेव्स लाइक ए नॉर्थ पोल. इसको नोट कर लीजिए. व्हेन यू आर डन, देन विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. This is very important. Let me tell you, important. And when we see the current in a clockwise direction, the magnetic field in the plane of coil is normal to the plane of coil and inward. So magnetic lines of forces will be inward. And always remember that magnetic lines of forces moves towards south pole. ये फेस साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा. इस थ्योरी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं why when two current carrying coil, when they are brought nearer to each other, they attract or repel. Because we know it very well, north and north repel each other, south and south repel each other, and north and south attract each other. तो ये बहुत एक important point है. If the direction of current is clockwise, then that phase has south polarity. That means it behaves like a south pole. So if you are done, then we'll have to cover a very important derivation today.
So this is important. This is not important. This is very, very important. Okay. So internet connection is unstable right from last 2 days. Okay. अब हम आगे बढ़ते हैं और हमें आज एक बहुत इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को कंप्लीट करना है. मैग्नेटिक फील्ड, मोस्ट इम्पोर्टेंट. मैग्नेटिक फील्ड at the axis of a current carrying circular loop. Important derivation. So note it down this. Most important. तो आगे बढ़ते हैं. चलिए देखिए डायग्राम देखिए. Let there be a circular loop of radius A carrying current I. Let P be, देखिए आप डायग्राम में, P be a point ओके. हेडिंग तो आप देख लीजिए. इंपॉर्टेंट हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. ये देखिए हम ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, हम इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं एट पॉइंट पी. दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप at a distance x from its center. Okay, now you should understand. अब देखिए, अब ये डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए. ये करंट कैरिंग लूप हमने दिखाया है, इसकी रेडियस a है. Let there be a circular loop of radius a carrying current I. Let P be a point ये देखिए पॉइंट दिख रहा है on the axis of the loop. ये रहा आपका पॉइंट P. इस पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. ये रहा इसका एक्सिस और यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. Let P be a point on the axis of the loop. इसको पूरा अच्छे से लिख के करेंगे. At a distance x from the center O. X from the center O at which the field is required. At which the field is required. तो देखिए हम क्या करेंगे, हम एक करंट कैरिंग एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें बायोट सेवर्ट रूल से
Let us select a current carrying element of length delta L. Due to this current carrying element, we have to calculate the magnetic field P. क्योंकि Barrett's Saver rule is only applicable for a current carrying element of very small length. So we have selected a current carrying length AB of length delta L. Due to this current carrying element, we need to find the magnetic field at point P. So we'll use the right hand palm rule. So thumb of right hand is kept in the direction of current and fingers at point P. Then draw the normal. So this is the what you are seeing. This is the normal drawn at the palm. Let delta B is the magnetic field produced by delta L at point P. Similarly, we will select an element just opposite to AB. Let this element is A dash B dash. Again, the length of the element is same, delta L. Now we can easily apply why we select exactly opposite elements, because just see this. The reason here current is flowing like this. For this element AB, current is flowing like this. Getting it? And but for this element A dash B dash, current is flowing like this. Just see that direction of current is reversed. इसलिए हम एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं. तो हमने मैग्नेटिक फील्ड सपोज कर ली डेल्टा एल के कारण कितनी डेल्टा बी. अब देखिए ये जो दो ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं ये मैं आपको क्लियर कर दूं. This triangle. Okay. Now consider this triangle. So I am talking about this triangle. And this triangle. They have one side in common, that is x. Secondly, this angle is right angle. This angle is right angle. So this is R. One more thing. Let me tell you, R is root of a square plus x square Pythagoras. So these two triangles are congruent. Are congruent triangles. So if this angle is phi, then this angle is also equal to phi. Agreed? Now, according to right hand palm rule, this angle should be 90 degree. This angle should be what? 90 degree. So this angle is phi. This is phi. This is 90 degree. So why? अब देखिए ये तो आपने कर लिया r की वैल्यू कितनी आ गई रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स. तो सबसे पहले हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया. और अब आप देखिए ये एंगल आपका जो यहाँ पर है एक लाइन में बनने वाले एंगल्स को आप कैलकुलेट करेंगे. पहले आप इस डायग्राम को बना लीजिए, फिर फर्दर हम एक्सप्लेन करते हैं. जिस तरह डेल्टा एल की मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा बी, उसी तरह इस ए डैश बी डैश की लेंथ भी डेल्टा बी है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी डेल्टा बी. अब इसको हम रिजॉल्व करेंगे. अब इसके बाद सबसे पहले आप डायग्राम को बना लीजिए. इसको हम समझेंगे डायग्राम को. When you're done with this, अब देखिए
डायग्राम बना लीजिए। ओके, अब देखिए सबसे पहले आपको एंगल समझाते हैं, बिना समझे तो आपको समझ में आएगा नहीं। तो ये देखिए, ये 90 डिग्री पे था डेल्टा में, और ये एंगल था हमारा, एक मिनट इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ये था 5, ये था 90, तो ये होगा 90 माइनस 5, क्योंकि एक लाइन पे बनने वाले एंगल्स क्या होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। और ये देखिए, ये एंगल भी 90 है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो सबसे पहले आप रिजॉल्व करना सीख लीजिए, किताबों में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। डेल्टा बी, अब हम इसे रिजॉल्व करेंगे। दिस एंगल इज 5, एक कंपोनेंट आएगा डेल्टा बी कॉस 5, दूसरा कंपोनेंट आएगा डेल्टा बी साइन 5। पहले समझ लीजिए, फिर हम अपोजिट एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। उसी तरह डेल्टा बी सिमेट्रिक है 5, फिर डेल्टा बी cos 5 and delta b sin 5. Delta b cos 5 will cancel each other. ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। So sin component will be added. Cos components cancels each other. इसी तरह इस करंट कैरिंग लूप में हमने ये एलिमेंट लिया, इसके सामने एलिमेंट लेंगे, फिर हम दूसरा एलिमेंट भी तो ऐसे भी तो ले सकते हैं। वी कैन से दैट दे आर, अब इसके सामने लेंगे ये वाला एलिमेंट, और फिर समथिंग लाइक दैट। आप देखिए, ये एलिमेंट लेंगे तो उसके सामने ये एलिमेंट लेंगे, तो जितने भी आप एलिमेंट्स लेंगे सबके कॉस कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और साइन कंपोनेंट विल बी एडेड। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो हम निकालना चाह रहे हैं वो होगी सिग्मा डेल्टा बी साइन 5, सिग्मा डेल्टा बी साइन 5। आर यू गेटिंग दिस? इस तरह आप बहुत सारे कंपोनेंट्स क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये अगला कंपोनेंट लिया, इसके सामने ये ले लिया। So we can suppose that coil is made up of several number of components, फिर ये लिया, इसके सामने ये लिया। तो जितने भी कंपोनेंट्स लेंगे उनके कॉस कंपोनेंट्स मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देंगे। ये पहले आपको समझना है। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तब तक कोई भी चीज ठीक से तो होने वाली नहीं है। इस डेरिवेशन को आज हमें करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। It is available with all the books, but you need to understand it. Because Biot-Savart rule is only applicable for a small current carrying element. तो अब देखिए हम इसको प्रॉपरली नरेट कर देंगे, है ना। तो नरेट करना जरूरी है वंस यू अंडरस्टैंड। अब देखिए, यहाँ एक और चीज है जो आपको समझानी है। अब मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए, आप इस एंगल को देखिए,
ओके, तो चलिए इसको लिखते हैं। लेट अस कंसीडर, अच्छे से लिखेंगे, कंसीडर अ स्मॉल current element of length delta L at the top of the loop, at the top of the loop। तो ये देखिए जो हमने करा है वही लिखा है। ये देखिए, ये हम यहाँ पर आ गए, ये देखिए ये हमने इसको सिलेक्ट किया। ओके, ठीक है। तो एट द टॉप ऑफ द लूप एट राइट एंगल्स, लैंग्वेज को ध्यान दीजिएगा, एट राइट एंगल्स टू द plane of the page and directed outwards। The magnetic field of the magnetic field due to this current carrying element at point P is given by delta B equal to mu 0 upon 4 pi I delta L sin 90 अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि आई और डेल्टा एल में आप देखिए कितना एंगल बनता है, आई और डेल्टा एल में कितना एंगल बनता है, ये देखिए करंट ऐसे जा रही है, ये आर और डेल्टा एल में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है आर और डेल्टा एल में, सॉरी। और हम जानते हैं आर इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सो इट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। सो अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, तो हम मैग्नेटिक फील्ड को लिख सकते हैं, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड को हम लिख सकते हैं डेल्टा बी इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। Let this is the equation 1। So coil is like this। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। It carries log 5 marks, used to carry 5 marks in the examination। In next two classes magnetic effects of current will be over, then we are starting with electromagnetic induction and AC circuit। The chapter EMI and AC is very important, it carries 8 marks। ओके, देखिए तो आगे अब हम
Similarly, magnetic field due to element A dash B dash directly opposite to the element AB is also equal to delta B. Is also equal to delta B. Now resolving डेल्टा बी वो हम पहले ही कर चुके हैं रिजॉल्विंग डेल्टा पी तो वो तो हम सब कर चुके हैं अब देखिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी रिजल्टेंट आप बुक से रेफरेंस ले लीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी as I told you is equal to sigma I have explained you इस अब देखिए यहाँ पर हम डेल्टा बी की वैल्यू रख देंगे म्यू 0/4 पाई I delta L by R square. Just see in the triangle, find sine theta perpendicular upon hypotenuse A upon R. So the magnetic field will be mu 0/4 pi I delta L A upon R cube. वो तो हम पहले भी रिजॉल्व कर चुके हैं सब पे that I have previously explained you that resolving the magnetic field and prepare this derivation from NCERT or any refresher you can use. If you have written it, ओके अब देखिए अब करना क्या है आपको मैथमेटिकल स्टेप समझा देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड होगी सिग्मा म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल ए बाय आर क्यूब अब देखिए सिग्मा नोटेशन इज जस्ट लाइक इंटीग्रेशन कांस्टेंट will come out of sigma notation I a r cube will constant sigma delta l. What is sigma delta l? Total length of coil. If coil has n turns, then total length of the coil will be total length of the coil equal to एक टर्न की लेंथ है 2 पाई a n की लेंथ होगी n into 2 pi a. So we will put 0/4 pi I a n into 2 pi a upon r cube. So mu 0/4 pi n I a square ni a square upon r cube.
तो मेन वो है एलिमेंट सिलेक्शन जो मैंने आपको बताया था। सिमेट्रिक बॉडी है इसलिए अपोजिट एलिमेंट्स मैंने आपको ये भी बताया था क्यों लेते हैं, और सभी डायरेक्टली अपोजिट एलिमेंट्स के कॉस कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और साइन कंपोनेंट विल बी एडेड, इसलिए हमने लिखा है सिग्मा। हम सपोज कर सकते हैं coil is made up of several number of elements. The problem was that the Biot-Savart rule is only applicable for a current carrying element of small length. It is not applicable for a current carrying element of large length. अब देखिए, तो ये से आपने कर लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब देखिए, r है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है r है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। तो r क्यूब क्या होगा, क्यूबिंग कर दिया 3/2। अब मैग्नेटिक फील्ड होगी μ0 अपॉन 4 पाई I n स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। So this is the derivation. अब देखिए, if m is the magnetic moment of coil, then we can write m as nia। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं μ0 अपॉन 4 पाई nia ma अपॉन, देखिए m के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, अब हम लिखेंगे, यहाँ स्पेस नहीं है, अगली स्लाइड पे लिखेंगे nia स्क्वायर अच्छा, देखिए अब हमने कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी, 2 पाई ए, एक मिनट, एक गलती हमने कर दी, यहाँ पर हमें इसको करेक्ट करना चाहिए। देखिए ये 2 पाई से हमें 2 पाई को कैंसिल करना पड़ेगा, मैंने कैंसिल नहीं किया, आपने भी ध्यान नहीं दिया। 2 μ0 अपॉन 2 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो क्या बचा μ0/2 nia स्क्वायर अपॉन r क्यूब। ओके, इसको आप एक करेक्शन कर लो। ओके, यू आर डन विद इट। अब यहाँ पे भी हमें ये देखिए, इसको करेक्ट कर लेना चाहिए, 2 पाई कैंसिल हो गया था, बाकी ठीक है। Okay, this was the correction that was needed. So this is the derivation for formula of magnetic field on the axis of current carrying circular coil. Okay, this is enough. μ0 upon 2 nia square upon a square plus x square, where a is the radius of coil, x distance from center, and number of turns,
अब देखिए, अब इसके कई केसेस हैं जो हम करेंगे. Important derivation, it carries most important म्यू जीरो अपॉन 2 पाई. और एक और चीज आपको याद रखनी चाहिए कि म्यू जीरो को हम लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7. I, current flowing through the coil. Current flowing through the coil. Okay, if you are done with it, then we can move further. बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. अब देखिए, if coil has n turns and having magnetic moment इक्वल टू कैपिटल एम. तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है एन आई एरिया. अब एरिया ऑफ कॉइल है यहाँ पर पाई ए स्क्वायर, क्योंकि हमने कॉइल की रेडियस है, तो एम को हम लिख सकते हैं एन आई पाई ए स्क्वायर. तो देखिए, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, तो हम एम अपॉन पाई को लिख सकते हैं एन आई ए स्क्वायर. अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू जीरो अपॉन 2 एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2. तो ये देखिए, यहाँ पे हम इसको रिप्लेस करेंगे m बाय पाई से. तो मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं m अपॉन पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2. अब बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप 2 से मल्टीप्लाई करना. ऐसा इसलिए किया जिससे म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आ जाए. हम जानते हैं उसकी वैल्यू 10⁻⁻7 होती है. 2m अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2. तो स्टूडेंट्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है in terms of magnetic moment. Nowadays, actually, students are getting short answer question, objective question. So this is the another way of writing down the formula for magnetic field on the axis of a current carrying circular coil. Two m upon where m is the magnetic moment of coil. The magnetic moment I explained you in the previous class means NIA. How it is calculated, number of turns multiplied by current into area of coil. Into area of coil. So do not get confused. This is capital A and this is you know small a. Both are different. दोनों अलग अलग चीजें हैं. Okay, if you are done with it, tell me. I am continuously recording wave optics on my computer. One by one, every lecture will have wave of 20 to 30 minutes. I will start uploading wave optics video. Okay, अब देखिए, यहाँ तक तो हम आ गए. मैग्नेटिक फील्ड थी म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, सॉरी अपॉन 2m upon a square plus x square to the power 3/2. If radius of coil is very smaller than x, then we can write
a square plus x square is approximately equal to x square, neglecting a. So in this case, the magnetic field on the axis of current carrying soil coil will be x square to the power 3 by 2, 3 by 2. So you will get it magnetic field as mu 0 upon 4 pi 2m by x cube. When you calculate the magnetic field on the axis of a current magnet, it also comes as mu 0 upon 4 pi 2m by x cube. इसीलिए हम कहते हैं कि current carrying coil behaves like a magnet. Behaves like a magnet. एक magnet की तरह behave करती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएशन है. वाई करंट कैरिंग कॉइल, क्योंकि एक स्मॉल मैग्नेट के एक्सिस पे जितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड एक स्मॉल रेडियस वाली करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पर होती है. इसलिए हम और कह सकते हैं, ऑथेंटिकली कह सकते हैं कि दैट करंट कैरिंग कॉइल behaves like a magnetic dipole, behaves like a magnetic dipole, or you may say that behaves like a magnet. It behaves that मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, हम ऐसा मान सकते हैं, we can assume that कि कॉइल के एक्सिस पर, अगर आपको प्रीवियस क्लास मालूम हो, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का भी जो कंसेप्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए. ओके, आई थिंक यू आर डन विद इट. अब देखिए एक छोटा सा हम न्यूमेरिकल करेंगे, वेरी नाइस न्यूमेरिकल. देखिए केस स्टडी करते हैं. मैग्नेटिक फील्ड at a point on the axis, which came in the examination, of a current carrying circular coil is found to be 1/27 part of magnetic field at its center. Find the distance of this point from the center of coil. Important. बहुत important question है, so we'll definitely do it. तो ऐसा लिखिए, magnetic field on the axis is 1/27 magnetic field at the
सेंटर, सेंटर में मैक्सिमम होती है मैग्नेटिक फील्ड μ0/2 Ni upon A. A is the radius, and here we have μ0/2 Ni A square upon A square plus x square to the power 3/2. अब देखिए क्या कैंसिल होगा, ये तो कैंसिल हो गया। ये भी कैंसिल हो गया। So what is left? 27a cube equal to a square plus x square to the power 3/2. आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी है। But always try to solve some what do you call it, questions given in your refresher. ओके, तो आगे बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आर यू डन विद इट? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग 1, इसको हम स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने से या स्क्वायरिंग करने के बजाय हम सोचते हैं कि क्यूब रूट ले लें। ओके, दिस विल बी बेटर। स्क्वायरिंग में तो प्रॉब्लम होगी, टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो ठीक है। तो 27a क्यूब टू द पावर 1/3 a square plus x square to the power 3/2 taking the cube root means raising the power by 1/3। अब आप देखिए ये है 3a का क्यूब टू द पावर 1/3, और यहाँ पे आप देखिए पावर से पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे भी यही होगा। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a square plus x square to the power 1/2। what is left, 3a equal to a square plus x square to the power 1/2 means root। अब स्क्वायरिंग the both sides, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9a square equal to a square plus x square equal to 8a square, so x equal to root of 8a square, so x equal to 2 root 2a, where a is the radius of coil। इस तरह से ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जा सकता है। 1/27, देखिए क्वेश्चन में खास बात है, 1/27, 27 का जो क्यूब रूट होता है 3 होता है। इसी तरह क्वेश्चन बन सकता है 1/8,
और इसी तरह एक और बन सकता है 1/125, 1/64। तो ये देखिए यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में खास बात है वो ये है, ये देखिए 27 का क्यूब रूट हमें मालूम है। ऐसा हम बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। 1/8, 1/64, 64 किसका क्यूब रूट क्या है? ये 27 3 का क्यूब है। जैसे 1/8 होता तो 8 किसका क्यूब होता? 2 का। I think you understand. Now you can note it down this. This is a very, very good question. Okay, this is something called very, very good. तो ये आपने नोट कर लिया? Are you done with it? तो इस तरह के बड़े क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ हमें करना है, तो आप उसको नोट करिए। वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B with distance x from its center. इसको खूब प्रिपेयर करिए आप। From its center. Center by distance 0 होता है, where B center is given by mu0 upon 2 Ni upon radius. तो सिमेट्रिक होती है दोनों साइड पर। इंपॉर्टेंट ग्राफ। वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, draw it. Okay, अब देखिए तो अब हम फॉर्मूले याद रख सकते हैं। आई थिंक यू आर डन विद इट। आपने इसे कर लिया है। रीड रिफ्रेशर इमीडिएटली आफ्टर द क्लास और उसको प्रिपेयर करिए। अब आप जैसे देखते हैं, अब देखिए क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस तो हमें मालूम है, हो गया mu0 upon 2 Ni a square upon a square plus x square to the power 3/2।
तो ये डायग्राम के साथ आपको इसको याद रखना है। What is x distance from the center? What is a radius of coil? और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? म्यू 0/2। सेंटर पे x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। NI/A। NI/A। We'll have अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास है वो है एम्पियर्स लॉ। उसकी अगली क्लास है टॉर्क एंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। फिर ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर। ये हमेशा याद रखिए, ए का मतलब यहाँ पर हमने ए को क्या ले लिया है? रेडियस ले लिया है। अगर आप आर लेना चाहते हैं रेडियस, तो आप एक की जगह आर लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू फील अनकंफर्टेबल with A, then you can choose your radius as R। फिर आप रेडियस को R की तरह चूज कर सकते हैं। So you are done with it। रेडियस को आप R की तरह चूज कर सकते हैं, कोई कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, तो ये 2 क्लासेस में एंड हो जाएगा। उसके बाद टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म और EMI AC और व्हाट आई एम टेलिंग यू वेव ऑप्टिक्स आई एम अपलोडिंग 30 मिनट्स। अभी 3 बन गए हैं, जब 5-6 बन जाएंगे तब मैं उसे अपलोड करूंगा। In your course page you will have another topic that is called wave optics।